Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, everyone. Assalamu alaikum, Miss Nida. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope I'm audible, right? Yes, you are audible. Welcome, everyone, to our session of July series. And today we have Miss Nida Azaz, and she's going to conduct a session related to her topic is really interesting: drawing a secret to stronger memory. And let me just give you a brief introduction of her. She's an associate partner Sanipra and founder Neon Women Network. She's also an instructional designing master trainer, certified digital trainer from Turning Point Training and Consultancy. She holds a master's degree in HR, working as a principal at Mayfield Higher Secondary School. She has diverse experience of 18 years, established three school campuses, and have done different certifications. Okay, so over to you, Nida. Before starting the session, there's a request from the trainer Yeah. uh, to every participant that please grab a notebook and a pen because she may have some interesting activity for you. So please grab your notebook and pen so that whatever she's saying, you are, at least easy to write, or whatever she wants to do an activity, you can use your paper and notebook to do on. ठीक है, over to you, Miss Nida. You may start your session now. Thank you, Ms. Fareen. Thank you for a warm welcome. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all the audience who are here from the platform of AdLab. I welcome you all. Today we are going to have fun yet a learning experience, as the topic itself suggests that drawing is an access to the memory. आप memory को retain कर सकते हैं with drawing, and it's a secret. Of course, it's a secret because mostly scientists जो है have discovered it, but yet the people like you and me, the layman, we don't know how it can benefit us in various areas of our brain capacities, right? So, inshallah, we'll have that. I'm just waiting for a second so that every one of you who is attending this session can have the paper or markers, colors, pencil, whatsoever you want to have to have this experience, inshallah. If you have it, then just give a thumbs up so that. Nida, are you speaking because your mic is muted? Can you hear me now?
Yes, your mic was muted before. Okay, it was muted from here. Okay, coming back to this thought again. Sorry for the interruption. What I was expecting from you all, that when you see this picture, whatever you first have a thought about this picture, just jot that down in the chat box. Thank you for having the pen and the notebook. Inshallah, we'll proceed with that. But first, let me know what you can think of this picture. Yeah, a lion is there. What about the other thing? Yeah, lion, cat, everybody can see that. But what is your imagination? What is that thought that comes to your mind firstly? I want to know that. Shadow appears as lion, someone said. Anila Mubarak said. Yeah, shadow of a cat seems like lion. A determination. Yeah, that's what the concept, the imagination is. A cat and shadow of a cat. Okay, strong. Yeah, that's what adjectives I was finding. Strong, shadow, all these things that you people are saying, और आगे भी आप लोग सोचेंगे इसको, shadow of drawing. Yeah, thank you for your inputs. So all these concepts are that your mind need this one pin, this one initiative to think out of the box, right? और ये out of the box सोचना ही is actually drawing, right? ड्राइंग को हम समझते हैं कि एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, मैंने तो आज तक ड्राइंग की नहीं है, बट ये इमेज दिखाने का आपको मकसद ये था दैट यू शुड स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, और इस इमेज को लेके आप अपनी पर्सनालिटीज को भी और ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना स्टार्ट कर दें. यू शुड स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ किंग. किसी ने कहा है किंग, राइट? चंदा. तो किंग भी आप समझ सकते हैं. यू कैन एक्चुअली comprehend that what are the feelings of a cat comparing to a lion. तो इस पिक्चर को आप various ends analyze कर सकते हैं. So that was it to give you a start into this session. Coming back. Now what? ये क्या लग रहा है आपको? Yes, I'm waiting for very curious answers, very interesting answers. Anyone? क्या लग रहा है ये आप लोगों को? Red लग रहे हैं? Okay, good. Confusion लग रही है. Samreen, I can see confusion. Who else? Thoughts in mind. Yes, बिल्कुल. These are our thoughts. Yeah, आप बिल्कुल कह सकते हैं ये thoughts है हमारे mind की, confused है. और आप कह सकते हैं ये wires हैं, आपस में hung up हुई हुई हैं, jumbled हुई हुई हैं. और what else? Actually मैं इसके पीछे की आपको एक स्टोरी बताती हूँ. ये जो एक इमेज ऑफ आर्ट है आप कह लें, ये एक 4 year old बॉय का है, राइट? और वो 4 year old बॉय को ये उसने बनाया अपनी क्लास में. या यू ऑल आर सेइंग वेरी राइट. मैं इसकी आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ, ये इमेज क्या है, इसके बैकग्राउंड. सो ये जब उसने बनाया तो उसकी टीचर ने उसे बुला के कहा कि डियर व्हाट यू हैव ड्रॉन. तो ही शी सेड कि मिस, उसने उस इस जिस तरह से आप लोग अभी इस छोटे से इमेज को देख के इतनी सारी थॉट्स जो हैं बता रहे हैं, पेन से लाइंस लग रही हैं, थिंकिंग है, थॉट्स हैं, लुक्स लाइक पजल, ये सारी बातें आप लोग कह रहे हैं. सो दैट 4 year old चाइल्ड, ही हैज अ थॉट इन हिज माइंड, और उसने इस छोटे से जम्बल्ड अप एक इमेज के अंदर पूरी स्टोरी बता दी. एंड व्हाट वाज दैट स्टोरी? ही सेड मिस, see, you can see a lion over here. Then on that corner, there is a giraffe. Then in between, I'm stuck. I'm stuck between these two animals. Then at that corner, my mother is coming to rescue me. And blah, 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 what not. That boy continued his story with just this drawing, this image. The teacher was listening and astonished कि भाई इस छोटे से इमेज के अंदर उसने कितनी अपनी थॉट्स डाल दी. सो यही सारा आपको आज कॉन्सेप्ट में जितना हद तक अल्लाह ताला ने चाहा मैं दे सकूंगी देने आई हूँ. दैट ड्राइंग इज अ वे टू एंटर इनटू योर ब्रेन, एंटर इनटू योर मेमोरीज, राइट? जब एक बच्चे का आपने अगर उसको फ्री हैंड दिया और वो ये लिख के इतनी बड़ी स्टोरी जनरेट कर रहा है, तो जस्ट सोचें व्हाट यू एंड आई कैन ओपन. ओके, मूविंग ऑनवर्ड्स. So by the end of this session,
what you all will be having, inshallah, Allah Ta'ala ne chaha to, you will be having identify the powerful impact of drawing on memory. और I guess ये दो booster activities से आपको idea हो रहा होगा कि drawing is just not, you know, एक normal चीज नहीं है. So we will identify कि इसका powerful impact क्या आता है memory के ऊपर. The other thing that you're going to get through this session is analyze why it's the most influential way of learning. जी हाँ, you heard it right. You can use this tool for learning purposes. आज तक तो हमने note taking, visual aids ये सब चीजें देखी थी. But now we will find out that how drawing can help you actually to learn something new, right? Discuss possible myths. Yeah, we will discuss that कि drawing से related क्या क्या myths हैं. Then we will explore techniques, practices that can comprehend drawing in many fields. We will explore those techniques that you can actually use because I know most of you are here teachers and you can use those techniques with your students. Okay, so again, if you are taking my session for the first time, I'm again and again doing these brainstorming activities to keep the audience and myself alive. So there is another brainstorming for you people, and it's a question: how many of you think you can actually draw? So you should be very confident about that, and you can just give a thumbs up or raise your hand. How many of you think you can draw? Good, Samreen. I mean, no, you need, you just need to give thumbs up or something. Yeah. Okay, mashallah. There are people who think they can draw. Tuba is saying she can't draw. Okay, Tuba, you will figure out that you can draw or not in this session, inshallah. Irfan Lakwe is saying yes, he can. Khadija and Saba Miman, I can draw. Yeah. Okay, there are few people who think that they can draw and they are confident enough as well. The next question: when was the last time that you sat down with a pencil, paper, and drew something? कब था? क्लास 4 में था, kindergarten में था, क्लास 3 में था, 2 में था, or when you become an artist, if you have chosen the art industry, when was the last time? या फिर आप बायो के स्टूडेंट थे and you were making your journals, right? बायो के स्टूडेंट्स रिलेट कर सकते हैं केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स के जर्नल्स के अंदर एवरी डे. विश फुरसान माशाल्लाह. Very good. So you need to see that when was it the last time that you sat down with a pencil, paper and drew something. कुछ बनाया हो, कुछ किया हो pencil और उसके साथ. That's why I told you people to bring your pen and paper to this session. Mashallah, mashallah. So there are people who are saying that yes, I'm a science student. Last day of school. Oh my God, Khatija, काफी पुरानी बात हो गई होगी फिर तो. Okay, drawn picture in practical journal of my son during art classes with students. Yes. So this was something to, have a brainstorming that when was it that you lastly drew something on a piece of paper and you enjoyed it as well. So let's debunk certain myths about drawing. Thank you everyone for being so active. Okay. So number one myth that we are debunking right now is, have you tried learning anything while drawing? ये भी हमने मिथ को डिबंक करना है. क्या आपने कभी कुछ सीखा? आपने हार्डली किसी का स्केच बनाया होगा या फिर आपने कोई प्लेजेंटली अपने आप को फील करने के लिए कुछ बनाया होगा. बट हैव यू एवर लर्न समथिंग व्हाइल ड्राइंग? Yes, I drew in the morning for class planning. Very good, Safia. Safia, right? Okay, the other debunkment. Let's do it. Is it necessary to be an artist or draw well to learn something? आप लोगों को क्या लगता है, क्या जरूरी है एक आर्टिस्ट होना कुछ बनाने के लिए? जैसे मैंने स्टार्ट में आपसे पूछा था कि कॉन्फिडेंटली हाथ रेस करें जो जिसको लगता है दैट दे कैन ड्रॉ, राइट? नो, नो, मोस्टली आंसर्स आर कमिंग नो. Yes, no, yes, no. Okay, a mix of answers. Yes, these are myths, and definitely the answer will be a mix of both the categories. The last one, जो हमें लगता है मोस्टली when we grew old, और जब हम अपने स्कूलिंग लाइफ से मोस्टली हट जाते हैं, तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है, why should I draw anyway? मैं क्यों ड्राइंग करूं?
ड्राइंग से मुझे क्या मिलेगा, इससे बेहतर ये नहीं कि मैं कुछ रील्स देख लूं, मैं कोई मूवी देख लूं नेटफ्लिक्स के ऊपर, या आउट ऑफ इंटरेस्ट मैं कुछ और स्टडी कर लूं, कोई बुक पढ़ लूं. सो ड्राइंग इज द लीस्ट कंसीडर activity for most of us, isn't it? या मेरे हाथ में पेन या पेंसिल हो, मैं ड्रॉ करती हूँ. वेरी गुड आयशा अजीज, वेरी गुड. सो यस, दिस इज अ क्वेश्चन, व्हाई शुड आई ड्रॉ एनीवे. सो इसको भी हम डिबंक करेंगे इंशाल्लाह. सो लेट्स ड्रॉ फर्स्ट. ठीक है जी. अब आपके पेन और पेपर की बारी आ गई है. आपने ड्रॉ करना है. उससे पहले मैं आपको ये जो दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, ये विजुअल टूल किट है आपकी. ठीक है, इसमें कुछ सर्कल्स हैं, इसमें कुछ रैंडम मोस्टली सर्कल शेप्स हैं अगर आप देखें, और साथ में उसके स्ट्रेट लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल, और कुछ डॉट्स हैं, फिर सेमी सर्कल्स हैं, मिनी सर्कल्स हैं, और यही सब कुछ इसके अंदर है. इन द मीन वाइल, अगर आप जब तक ये अपनी टूल किट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं आप लोग के लिए व्हाइट बोर्ड को ऑन करना चाहूंगी. And I hope I have the access. I'm stopping share here. I hope सबने white जो सारे वो tactics थे उनको देख लिया होगा. And I'm unable to open my whiteboard. Just give me a second. Here it is. Let me know if you can have it on the screen. Can you see it, everybody? Yeah, I guess you can. Yes? चलें जी. So let's start some boggling game और some इंटरेस्टिंग कुछ हम करेंगे. एंड व्हाट आई नीड फ्रॉम यू पीपल इज कि आप सब इस पे प्लीज ड्रॉ ना करें अभी, प्लीज प्लीज प्लीज. मुझे करने दें तो मैं आपको वो पॉइंट क्लियर कर सकूंगी दैट हाउ मेमोरी हैव एन इम्पैक्ट ऑफ ड्राइंग, राइट. सो प्लीज इसको क्लियर कर दें जो भी इसके ऊपर बनाना स्टार्ट कर रहा है, so that I can tell you what to draw. And thank you very much. So whatever I'm saying and drawing, आप सब ने मेरे साथ, आई गेस ये एक्टिविटी 2 मिनट्स हार्डली लेगी अगर हम साथ साथ चलते रहेंगे. आप सब ने मेरे साथ उसको ड्रॉ करते जाना है, अपने एंड पे और अपने पास ही रखना है, राइट. ओके. So first draw a circle in between, then few arrows like this, like this, like this, and like this, and one here like this. Okay. मैं टाइम को बचाना चाह रही हूँ. सैमा मजीद, प्लीज आप मेरे व्हाइट बोर्ड पे यूज ना कीजिए. ओके. नाउ कमिंग बैक. नाउ यू हैव टू ड्रॉ a diamond shape. फॉलो करते रहें ऑन योर पेपर, ऑन योर शीट ऑफ पेपर, नॉट ऑन माय व्हाइट बोर्ड. ओके, डायमंड के साथ देन यू ड्रॉ दिस इमेज, एंड अगेन दिस line. Then here again you can draw a circle with not visible. Khatija, you cannot see the whiteboard. I guess everybody can see and I can see it as well. और आप बाकियों के इमेजेस को मत ड्रॉ करें, मेरे इमेजेस को प्लीज ड्रॉ करें. Okay, then we can make a blurry image that is a cloud. Thank you, Saima. I need to erase that all again. Just give me a second. मैं सबके images बता, मुझे लग रहा है सारे बच्चों के ना बच्चा अंदर से बाहर निकल आया है. जिस जिसको ड्राइंग करनी थी, एवरीबडी हैज स्टार्टेड डूइंग इट, माशाल्लाह. पता चल रहा है कि सबके अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है. बट अब ये टीचर आपको स्ट्रिक्टली कह रही है प्लीज मत करें, सो दैट आई कैन मेक माई पॉइंट क्लियर. सबके मुझे नजर आ रहे हैं. अनीला
एंड सफिया फसिया आप अपनी शीट्स पे करें, नॉट ऑन माय व्हाइट बोर्ड, ठीक है? ओके जी, सो व्हाट आई डिड, आई ड्रॉ दिस, देन आई ड्रॉ अ सर्कल and a cat. Yeah, it's a cat, my cat. Then here a diamond shape with a small tail, with a small eye, and some blurry images. Then I created here a house. See, I'm using very basic shapes. Triangle, some small lines. That's it. Then here I created one line, then again this, then this blurry image, and here it's a tree. Right, so how many images do we have? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, and 5. So all of you who have done it, just give a thumbs up on your sheet. Yes, done? I'm counting till 3 and I'm going to remove it then. 1, 2, 3. Okay, so now I will use the other whiteboard and I'm just closing it down. Coming back, we will let you know that what was actually the reason behind this activity. In the meanwhile, we are back to the presentation to continue. You have your visual kit in your mind, and all those who have drew this with me, they must be having that with them. Please put it down on the side of your table or wherever you are sitting so that you cannot see it anymore. You have done it with your hands, with your fingers. Now you don't have to, learn it or see it. Okay, moving on. So you have your visual kit and what this experiment actually all about and where did it started? It started with Myra Fernandez, Jeffrey Weems, and Melissa Maida, who were the experts in the science of memory. Yeah, how people encode, retain, and recall information. They were experts in the science of memory, and they figure out this pattern, this way of uh, you know to retain and encode memory. At the University of Waterloo, this experiment is very famous with the name the University of Waterloo. What they did over there, they conducted this experiment to better understand how activities such as writing, looking at pictures, listening to lecture, drawing, and visualizing images affect a student's ability to remember information. I assume that every one of you must be teacher and you must be facing difficulty with some students who are slow learners, right? Who are late learners, you can say. And you can use this tool for them to have a better understanding and equal understanding with the other students that are normal. So we'll see how it goes on. Here there is this find out that they have done with the experiment at the Waterloo. They said that note taking, writing words. हमारे सिंध बोर्ड में और देखा जाए मेनली सिंध बोर्ड में आई गेस ओ लेवल्स के अंदर तो इतना नहीं होता है बट सिंध बोर्ड के अंदर तो यही है द मोर यू राइट द मोर यू गेट द मार्क्स द मोर यू राइट द मोर यू गेट द मार्क्स राइट देन इस एक्सपेरिमेंट के एंड में रिजल्ट क्या था देखें आप नोट टेकिंग राइटिंग वर्ड्स पार्टिसिपेंट्स को सिर्फ 20% याद था एक होता है rectification right that we mostly do in since system as well since board system as well and I guess to some extent in O level as well or any other board but that rectification and then writing it down was revealed कि 20% ही बच्चे retain कर पाए थे whereas जिन्होंने ड्राइंग के टूल्स को यूज किया 45% of the terms they had drawn यानी कि उनसे कहा गया कि जो भी चीज उन्हें एक्सप्लेन की जा रही है वो उसको ड्राइंग की मदद से अंडरस्टैंड करें या उसको नोट डाउन करें अब वो ड्राइंग के थ्रू नोट डाउन कैसे किया जाता है ये भी हम देखते हैं इंशाल्लाह ओके सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट ड्राइंग इज बेटर देन राइटिंग इस एक्सपेरिमेंट से
निकाला गया जो रिजल्ट था वो यही था दैट इट इज बेटर देन राइटिंग. आई एम नॉट सेइंग एंड द साइंटिस्ट दे आल्सो नॉट सेइंग दैट राइटिंग इज बैड. राइटिंग इज नेवर बैड, बट वी आर फाइंडिंग वेज कि जिसके थ्रू ज्यादा लर्निंग कैपेसिटी वाले बच्चों को और इंडिविजुअल्स को जो डिफरेंटली एबल होते हैं, जो डिफरेंटली सोचते हैं, उनको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है. और वेयर एज जो नॉर्मल भी हैं वो भी इस टूल को यूज कर सकते हैं. और आगे जाके मैं आपको बताऊंगी इस टूल को और कौन कौन से मेंटल डिजीजेस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं. So researchers find out that even if people weren't good at it, drawing as a method to help retain new information, recall and encode memory was better than rewriting notes. आप देख सकते हैं इमेज के अंदर कि drawing makes you thinking more divergent. कभी किसी ने अपने लेक्चर्स के अंदर मैं क्या बनाती थी, बहुत ही जब मैं क्लास सोशल स्टडीज बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, व्हेन आई यूज्ड टू टेक दैट, तो मैं ड्रॉ करती थी रैंडम इमेजेस अपने बोर्ड पे. एट दैट टाइम आई डिडंट न्यू कि मेरा लर्निंग स्टाइल ड्राइंग है, बट मैं रैंडम ड्रॉ करती थी और बड़े मजे मजे से जो है वो ड्रॉ करके कनेक्शंस बना के बच्चों को एक्सप्लेन करती थी. एंड दैट्स हाउ मेरी लर्निंग जर्नी आगे प्रोग्रेस हुई. सो इस लर्निंग के अंदर, इस लर्निंग टेक्निक के अंदर विथ ड्राइंग आपके तमाम एरियाज को ये टैप करती है. दैट इज विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक. ये तीनों आपके एरियाज विथ ड्राइंग टैप हो जाते हैं. अभी हमने छोटी सी ड्राइंग की, यू वर सीइंग, यू वर लिसनिंग माय वॉइस एज वेल, एंड देन एट द एंड यू वर यूजिंग योर हैंड. सो तीनों स्टाइल्स इस ड्राइंग टेक्निक में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं. दैट्स व्हाट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग. सारे किस्म के लर्नर्स के अंदर एड ऑन हो जाते हैं. ओके, अब देखते हैं ये ड्राइंग एक लैंग्वेज कैसे है. जैसे अरबिक एक लैंग्वेज है. एक्चुअली अरबिक मेरा पहला प्यार है, यू कैन से. आई लव लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस. सो जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, उर्दू है, मैथ्स है, एवरी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज के कुछ टूल्स होते हैं, कुछ ग्रामर होती है. सो एज लर्निंग दिस लैंग्वेज दैट इज ड्राइंग, इसके भी कुछ टूल्स हैं. सबसे पहले तो आपको बेसिक शेप्स आने चाहिए होते हैं. ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आपकी टूल किट दिखाई थी, यू कैन सी कि इसके अंदर क्या क्या है. They have this circle, then we have this square, triangle, and this is a blurry image. I call it blurry or whatever you can call it. ठीक है, इसको बचपन में मैं क्लाउड भी बना देती थी इसके अंदर से, आप भी बनाते होंगे, आई होप. तो ये बेसिक शेप्स हैं आपके जो आपको इस लैंग्वेज को लर्न करने के लिए यू मस्ट हैव इन योर बकेट. ठीक है, और इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये हर बच्चे को आते हैं जिसको बस क्रिएटिव होना हो. दे नो these shapes. Then second step, you need to learn the vocabulary of it. Pictionary, yeah. जैसे डिक्शनरी होती है इंग्लिश की, वैसे ड्राइंग के अंदर इट्स पिक्शनरी, राइट. देखेंगे स्माइली फेस बना लेंगे आप, एरोज बना लेंगे, हार्ट है. और सबसे मजे की बात, ड्राइंग के अंदर हर चीज का आपका अपना एक अपना एक एनालिसिस होगा, अपनी एक डेफिनेशन होगी. बनी बनाई इंग्लिश, उर्दू या किसी और लैंग्वेज की तरह इसकी डेफिनेशंस नहीं होती. ये सब आप खुद से ड्राफ्ट करते हैं. एंड द थर्ड रूल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रामर. हर लैंग्वेज को स्टैंड करने के लिए ग्रामर बहुत जरूरी है. इसी तरह ड्राइंग के अंदर भी ग्रामर है, राइट. सो ग्रामर को, वोकैबुलरी को, साउंड्स को, इन तीनों को जब आप मिलाते हैं तो आपकी ये न्यू जनरेटेड लैंग्वेज ड्राइंग बन जाती है. सो लेट्स सी हाउ इट गोज ऑन. ओके, सो लैंग्वेज ऑफ ड्राइंग स्टेप वन हमने क्या डिस्कस किया. हमने डिस्कस किया कि आपके पास बेसिक शेप्स होने चाहिए, और जो आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इमेज में नजर भी आ रहे हैं, राइट. यू कैन हैव ऑल दीज बेसिक इमेजेस, और इन्हीं बेसिक इमेजेस को लेकर आप आगे अपने फर्स्ट स्टेप से कंटिन्यू कर सकते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 44 डिफरेंट साउंड्स होते हैं, इज दैट राइट. लेकिन गुड न्यूज क्या है आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, ड्राइंग में सिर्फ 5 बेसिक शेप्स होता है, राइट. सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, एंड देन दिस प्यारा सा ब्लरी इमेज. ठीक है, आप इसको ब्लर्ब भी कह सकते हैं, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं. ये रैंडम इमेज एक होता है जो कि आप इसे यूज कर सकते हैं अपनी ड्राइंग को कनेक्शंस और कंप्लीट करने के लिए. सो लेट्स सी द स्टेप 2 में हमें क्या दिखा रहे हैं.
लैंग्वेज ऑफ ड्राइंग का स्टेप 2 है कि आपको इसके वर्ड्स जो है वो लर्न तो नहीं करने, बट आपको अपनी एक डिक्शनरी, जैसे इंग्लिश ने डिक्शनरी डेवलप है, उर्दू में डिक्शनरी डेवलप है, अरबिक में भी है, आप डिक्शनरी बना सकते हैं अपनी खुद वर्ड्स की, राइट। फॉर इंस्टेंस देखें, हर शेप का कोई ना कोई मीनिंग होता है। फॉर इंस्टेंस आपको एग्जांपल दी हुई है एक लाइट बल्ब की, ठीक है, उसके अंदर एक छोटी सी दो लाइंस हैं, देन यू हैव दिस long rectangular shape downward and then you have a semicircle at the end. So when you connect all these three things, तो ये आपका फर्स्ट इमेज था, ये सेकेंड इमेज था, एंड देन थर्ड इमेज। ड्राइंग के अंदर आपको परफेक्ट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे, the words will start melting into each other and you can use their short forms and so on. It's like learning to speak new language, right? आपको इसमें मीनिंग नहीं चाहिए कि नहीं मेरा तो ये सर्कल बिल्कुल परफेक्ट हो, मेरी लाइंस बिल्कुल परफेक्ट हो। नो, देयर इज नो कंडीशन लाइक दैट। यू जस्ट नीड टू हैव अ मीनिंग टू योर ओन ड्राइंग। ओके, स्टेप 3 क्या है इसका? द ग्रामर, जो कि हमने डिस्कस किया। जस्ट लाइक लर्निंग लैंग्वेजेस, ड्राइंग की भी अपनी एक ग्रामर है। वो ग्रामर कैसा है? आप कंबाइन करेंगे टेक्स्ट को, पिक्चर्स को, और पिक्चर्स बहुत कुछ कहती हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ देखिए, कीप इट सिंपल, अपना पॉइंटर ला रही हूँ। आपको इस हाउस की बजाय एक सिंपल हाउस भी आप बना सकते हैं विद जस्ट ट्राइंगल एंड अ रेक्टेंगल। योर हाउस इज रेडी। बच्चों ने बनाया होगा ना बहुत से लोगों ने। सो योर हाउस इज रेडी, सो कीप इट सिंपल। Then you have to combine the two of your content, combining pictures, right? आपको इस तरह के यूज करके कंबाइन करना है, एंड योर कंटेंट विल बी रिमेम्बर मोड। व्हाई? बिकॉज आपने उसको ग्लू कर दिया किसी भी चीज से, कोई एरो से, या कोई जैसे हमने बल्ब इमेज देखा अभी, उसको आप यूज करके इन सब वीडियोस को, अपने वर्ड्स को कंबाइन कर सकते हैं, एंड हियर यू आर अ विनर। कुछ इसके अंदर रॉकेट साइंस है, कोई इसके अंदर स्ट्रेट लाइन आपको स्केल से लेके बनानी है या आपको कोई स्केचिंग करनी है, नो, देयर इज नो रूल। यू जस्ट नीड टू हैव दीज थ्री स्टेप्स एंड योर ड्राइंग will have a meaning eventually, inshallah. Okay, let me erase all this. We'll move towards the next step. Okay, so that's step 4. ये ग्लू करना भी सीखें। ऐसी ड्राइंग्स मेरे ख्याल से गर्ल्स को बहुत याद होंगी, जब वो अपनी पर्सनलाइज डायरी या अपनी जर्नलिंग करती हैं, तो ये ऐसे इमेजेस यूज करते हैं ना हम लोग, लाइक दिस। ये यूं यूं करके सक्सेस लिख दिया, थॉट लिख दिया, कुछ चार्ट्स बना दिए, कोई पाई चार्ट बना दिया, कुछ टेक्स्ट लिख दिया, कोई स्पीच बबल कर दिया। ये सारी चीजें आपकी ड्राइंग को ग्लू करेंगी। चार्ट्स, एरोज, हेडिंग, स्पीच बबल, दे ऑल ग्लू योर ड्राइंग, यानी कि आपकी ड्राइंग को एक कनेक्शन देंगी। हर लैंग्वेज को कनेक्शन चाहिए होता है, और ड्राइंग की लैंग्वेज का कनेक्शन ये सारे एलिमेंट्स है दैट यू कैन सी on the screen, and you can take a screenshot as well of these all 4 steps to learn this language of drawing. Okay, अब फिर से बारी आ गई। You have your paper or pen or not, doesn't matter, you have to think, right? मैं आपको पिक्चर्स में सोचना सिखा रही हूँ, ठीक है? Everybody is with me, right? Okay, so an innovative person, I'm giving a second, और अपने माइंड में आप सोचें एक इनोवेटिव पर्सन को सोचते ही क्या पिक्चर आ रही है? पिक्चर आपके माइंड में क्या आ रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I hope you all having a picture in your mind of an innovative person. So let's see what can be the options. Ah, a circle, a smiley face, and with a bulb. An innovative person. What else could be? Yes, a brain picture. Left, right. Innovation plus a person. That is the definition of someone who did this activity of thinking in pictures. आपको किसी और पर कुछ और इमेज आया होगा। फ्लावर बुके, वेरी गुड तहसीन, दैट यू आर थिंकिंग इन पिक्चर्स। वर्ड्स और लैंग्वेज से हटके ड्राइंग पिक्चर्स में सोचना स्टार्ट करें। नेक्स्ट, ट्रस्ट। ट्रस्ट को सोचें। हाउ कैन यू पिक्चराइज ट्रस्ट? Yes, everyone. How can you picturize trust? सोच लिया?
A tree, okay. Anyone else? Friend, yeah. Trust को friend से सोच लिया. Pictures, लेकिन ठीक है. Keep in mind you have to think of pictures. So let's see. Ah, trust can be like this, and trust can be like this as well. You agree with me? Yeah, hand with checks, happy faces, joining hands. Someone just notched out. Hands together. Yes, these all are the pictures that can lead you towards this word in thinking in pictures. Trust. Very good, mashallah. Okay, so this is a small video, and I hope you all can see it. Draw to think, right? Draw to visual mind. Your visual mind needs thinking. Draw to imagine. See how the imagining things are coming up on your screen. Draw to problem solve. Why, who, what, when, and where. Draw to persuade. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. You don't know, but you will read somewhere. Draw to remember. Most importantly, draw to remember. So this was a small clip, a reminder that we have done up till now. Okay. So now we've come to this point that how you can use drawing in your classrooms, in your lecture rooms, or with your own kids, right? So these are some techniques that I have found out in my research. Student-centered learning aids. What are those? Those can be maps, anchor charts, or diagrams, and you can use those student-centered learning aids to help your children think with the help of this tool that is drawing, right? What else could be there? Interactive notebooks, जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की. नोटबुक्स को स्पेशली मैंने देखा है ज्यादातर जो है कॉन्सेप्ट ये गर्ल्स के अंदर होता है. मैंने बॉयज को ये करते हुए नहीं देखा, बट क्या पता करते भी हो. बट इंटरैक्टिव नोटबुक्स की आप हैबिट्स डाल सकते हैं in your students. You can ask them to write the notes, and on the other side ask them to do the drawing of the same thing. You cannot stop them from writing. Writing is an essential part, but yet on one corner of that page you can ask them to write few notes with drawings and diagrams and charts. You can make this interactive notebook practice in subjects like which are very dull. For instance, मेरे लिए तो एसएसटी बहुत डल था, तो मैं उसको ऐसे ही यूज करती थी टू मेक इंटरैक्टिव. ओके, द थर्ड टेक्निक इज डेटा विजुअलाइजेशन. हाउ कैन यू डू दैट? You can use this technique in the for the concepts in maths and literature. डेटा को आपने विजुअलाइज करना सिखाना है बच्चों को, बिकॉज ये दोनों सब्जेक्ट्स भी दे आर वेरी स्ट्रेट, येट यू नीड स्टूडेंट्स टू ओपन अप देयर वर्सिटैलिटी, देयर विजुअलाइजेशन. तो आप उनको डेटा दें और देन उनको बोलें कि वो उसको विजुअलाइज करें उन कॉन्सेप्ट्स को जो कि आप मैथ्स और लिटरेचर में दे रहे हैं. या दे कैन ड्रॉ द नेम ऑफ टॉपिक थ्रू पिक्चर्स टू मेक इट क्रिएटिव. वेरी गुड सबमिवन. Okay, the other technique is book making. Can create comic books. कौन बनाता था कॉमिक बुक्स और कौन टीचर देती है समर ब्रेक के अंदर अपने बच्चों को कॉमिक बुक्स या जर्नलिंग करने की? मैंने तो दी है अपने स्कूल के अंदर. आई आस्क माय टीचर्स टू टेल द स्टूडेंट्स टू मेक comic books of their favorite character. If not comic books, they can do biographies, but with with images, with drawing. So book making is a very good technique. The other one is assessing learning through art, right? How you can do that? Understanding about a topic through art rather than one correct answer. For instance, आप एक picture लगा लें, आप कोई भी scenery लगा लें अपनी class के अंदर, and then you start asking students, dear, what you can think of this picture. जैसे वो start में मैंने आपको एक image दिखाया था ना, कुछ wire up हुआ हुआ और एक random सी picture थी, lines. तो इसी तरह से आप कोई भी इमेज दे सकते हैं बच्चों को, एंड देन यू कैन आस्क देम कि इसको कैसे आप मुझे एलैबोरेट करोगे. देन उनकी जो वर्सिटैलिटी है, उनकी सोच की वैरायटी है, वो ओपन अप होगी आपके सामने. सो असेसिंग लर्निंग थ्रू आर्ट इज अगेन अ वेरी वाइटल टेक्निक दैट यू कैन यूज इन योर क्लासरूम्स. ओके, अब ये वो एक्टिविटी आ गई जो कि आप हैंड्स ऑन कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ. द स्क्रिबल ड्राइंग गेम, back and forth drawing, and I would like you to show a small clip of it, that how a child is doing. So for that I'm stopping the share again.
and let me go towards that. And give a thumbs up when you can see the screen. Yes, so this was it. A scribbling way that girl was doing, और ये एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा जो है वो एक आपके लिए कहने के प्रूव आउट कर सकती है that you can actually do it with your students and your own kids as well. So back and forth drawing, you can practice it as well on your own just to see how random your drawings are and where your imagination is taking you. Just don't focus on the meaning. Never do focus on the meaning while you're drawing. Okay. The other activity that you can practice for memory taking with drawing is visual note taking. This visual note taking is an actual other name of sketch noting, right? You can see the images which are here on your screen that can make connection from readings, videos, and lectures and make those ideas visible using sketches, words, shapes, and colors. आप इसके अंदर variety of elements add on कर सकते हैं. You can add on all those bullets that we studied in the initial steps of drawing. तो वो सब add करके you can actually make your own visual note taking. And I observe that this technique is very much common these days in offices where there are very less interactive activities और वहां पे कोई इनोवेशन नहीं होती है, तो वहां पे क्या करते हैं ऑफिस एरियाज के अंदर ऐसे विजुअल नोट टेकिंग इमेजेस को बोल्ड कर देते हैं ऑन द वॉल सो दैट जो 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 एम्प्लॉयज हैं व्हेन दे गेट बोर्ड एंड दे आर नॉट गेटिंग क्रिएटिव, वो ऐसे इमेजेस को देख के क्रिएटिव हो सके. So visual note taking another technique that you can use. Okay, why it is smarter, why it makes you smarter, this visual note taking makes you smarter because it gets you a quick overview. आपने पढ़ा या देखा and you get a quick overview, आपने उसको अलाइन कर दिया विद सम सर्कल्स, लाइंस एंड एरोज, और कम जगह पे आपको ज्यादा लिखने को मिलता है. फॉर इंस्टेंस जैसे वही अभी हमने बात करी राइटिंग के कंपैरिजन में, व्हेन यू हैव टू फिल आउट pages and pages and pages, whereas when you are taking visual note taking you have more space to think, then you become very divergent, right? आप हर एंगल से सोच लेते हैं. मैं इसको अपने स्कूल में कहती हूँ, उर्दू के अंदर हम कहते हैं इसको मैं भूल रही हूँ बिल्कुल नाम अभी, अदरवाइज मैं आपको इसकी एग्जैक्ट एग्जांपल देती हूँ. एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग इट मार्वेलस इन दिस. यू कैन आल्सो ट्राई इट. आप जाएं अपनी क्लासरूम में जाके अपने बोर्ड पे कुछ ना लिखें, जस्ट एक बबल क्लाउड बना दें एंड लेट देम थिंक कि ये क्या है, वेयर इट इज टेकिंग यू, व्हाट यू कैन थिंक आउट ऑफ इट. एंड फोर्थली यू गेट टू अ डीपर लेयर. जैसे उस बच्चे की हमने स्टार्ट में एग्जाम्पल देखी थी कि वो उसने उस इमेज को लेके क्या क्या एग्जाम्पल, उसका क्या माइंड सोच रहा था, व्हाट ही वाज हैविंग एट द बैक ऑफ हिज माइंड विद जस्ट दैट दैट मेसी इमेज. हमारे तो वो मेसी इमेज था, बट उसके लिए उसके अंदर उसकी मामा, बाबा, जिराफ और सारे एनिमल्स थे. so that's how important these visual thinking are. It makes you more smarter. Okay, so vision note taking let you see big picture. अंदर क्या चल रहा है माइंड के, बैक ऑफ द माइंड क्या कुछ चल रहा है आपके भी या आपके स्टूडेंट्स के भी. इट अलाउज यू टू सी दैट बिग पिक्चर, राइट? ओके, सो दिस इज हाउ इज इट. यू कैन सी किस तरह से कंपेयर हो सकते हैं अगर आपने विजुअल नोट टेकिंग की एग्जांपल लेनी है. सो यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज दैट इन दिस वे यू कैन नोट डाउन योर lectures and you can ask your students to follow this as well, because there is no rule in it. You just have to go with the flow and it takes lesser
space on your, I can see a lot of good reviews that your teachers are sharing, mashallah, jazakallah. And I can see that yes, you are using this technique in your classes, mashallah. Okay, coming back to it, quick tips. इन दोनों टेक्निक्स को देखने के बाद जो that you can use in your classrooms, quick tips are: add text, draw image, create structure, add connectors and keep it short. For instance, अगर आपने इसको भी ज्यादा linger on कर दिया, इसको भी drag कर दिया, then there is no point of using drawing. आप, yeah, mind map, thank you Tuba. Mind map was the point that I was sharing, that you can use this technique as well while delivering your lectures, and it can prove to be point out. Yes, so I was like saying that quick tips that you need to focus on while you're using this technique, because this is not, again, this is not your written technique. This is something that you need to think out of your brain, and you just have to let it go. Come with the flow, go with the flow. So just add connectors, create structures, that images, that objects, and then you can keep it very short. See, what are these? We will figure it out. ये कौन सी एक और टेक्निक आ गई है for drawing? ऐसे इमेजेस आपने भी देखे होंगे, और क्या पता आप मुझसे कोई ये करता भी हो. Let's see. Images like this. Yeah, Tuba, I guess you have been doing it. See? अगर एक लेमैन देखे तो वो तो यही कहेगा कि ये तो बहुत अजीब किस्म का आर्ट है और कुछ समझ नहीं आ रहा. बट इसके अंदर बहुत डेप्थ है, राइट? यस, इट इज अ डूडलिंग आर्ट. डूडल्स कैन सजेस्ट अ लॉट अबाउट योर मूड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न दैट यू फॉलो, राइट? ये एक डूडल आपके सामने मैंने शेयर किया है. छोटे से आप समझ लें डूडल्स के signs that you can use, probably because doodle, again, it's a complete art form, and you can use it to think and to get rid of your worries as well. Yes, आप अपनी worries से भी दूर हो सकते हैं if you doodle more, and you can be more creative and stress free. Let's see how. So famous people doodle too. Yes, Richard Nixon doodled mostly straight lines and geometric shapes, and Barack Obama drew this for a charity while a senator. So he was a senator and he was sitting in a charity show, and he was doing, doodling what you can see there. Richard Nixon, he was a doodle man and he used to doodle such things. So these are very famous people who doodle. Why? Why they doodle? Because they want to get rid of their stress condition. In this condition, their brain get a break. एक आपको पावर नैप मिल जाता है. पावर नैप समझते हैं? जल्दी से करने वाला, और उससे आपको एक रिफ्रेशिंग वेव ऑफ एनर्जी मिलती है. So yes, doodle is again a way that you can use for your drawing techniques. Okay. डूडलिंग अफेक्ट ऑन द ब्रेन. अगर ये लोग डूडल करते थे तो क्या होता था इनको? हाउ देयर ब्रेन यूज्ड टू अफेक्ट, एंड व्हाई यू शुड डूडल मोर. इनफैक्ट साइंस ने प्रूव किया है द पीपल हु आर हैविंग डिप्रेशन वो भी डूडल ज्यादा करें, बिकॉज अगर आप डूडलिंग करेंगे आपका ब्रेन उस प्रोसेस से बाहर निकल जाएगा जो आपको डीप डाउन डार्कनेस की तरफ लेके जा रहा है. तो यस, मेडिसिन, अल्लाह का नाम, एवरीथिंग टुगेदर, एंड देन दिस थेरेपी ऑफ डूडलिंग. अभी से बुक पकड़े, हैव योर नोट पेन इन योर डायरी और डूडलिंग स्टार्ट कर दें. एंड आई बिलीव मोस्टली लोगों को डूडलिंग करने की आदत भी होती है. व्हाई? बिकॉज जब लेक्चर बहुत बोरिंग हो रहा होता है वो साइड पे डूडलिंग कर रहे होते हैं, राइट? एंड इट इज नॉट अ साइन ऑफ डल स्टूडेंट और डल डल मैन. इट इज अ साइन ऑफ creativity, as you have seen that famous people doodle do, and it affects your brain. See, it brings education, focus, creativity, problem solving more into your brain. So that's wonderful. So doodle more. Okay, so there is another video that I wanted to share with you, and it's a technique of doodling with both the hands. So let me share that with you. Yes. Yes, Nida. Time is up. Almost.
Okay, just give me a second so that I can share this last video with them. Can I? Yes, yes, yes. Okay. We have time. We have Okay. 10 minutes. Sound nahi hai. Do you want to play the sound? Yeah, without sound it's fine. Sound nahi aa You raha need to baby? share your sound. Share your computer sound. It's okay if it's not sound is not there. It's I just okay want to now. show them the technique. Okay. So this was a technique of doodling that you all can, use in your classroom. In this way, your both the hand function can be used as well. So it is very vital and very effective if you use this in your classroom with the student. So doodle and memory have a very strong relationship, and you can doodle while keeping your memory alive. Whenever you're feeling down, just start doodling and start yourself with the free drawing. Okay, as we have almost bypassed. So this was the doodling thing. And at the last, I would like to share this. How does drawing help you? 80% what they see and do and 10% what they hear, right? 20% what they read. That is according to Edgar Dale, that 80% is something that you see and you do has more importance in your memory. So let's test your memory. This is the last thing that we are going to do. Miss Farine, can we do this check-in? We have 3 minutes. Yes, we can do, right? Okay. So don't see your paper. What I'm going to do is I'm going to ask with you all that what I drew at the start of our session. And then you all can let me know with your memory that you do and to check that yes, drawing has an impact on the memory, right? So you don't have to cheat. Don't see that image that you all drew with me. Okay, I'm opening the whiteboard for that. Okay, so I'm drawing, and all you have to do is you can, because I cannot see your images and I can not see you as well. What you can do is you can just draw on my whiteboard now to see how much you remember. But you have to listen first, what I will say. Okay? Okay, what was there at number one? Draw here. Number one. Number two. Number three. And number four. I hope you are recalling. Yeah, it will be messy. Don't try to understand it. Just try to uh, actually remember what was there at number one. Oh my God, everyone has started doing it. In this way, you all not
will be able to, yeah, you can tell in the, in the chat box, what was there at number 1? Yes, number 1. Sun, okay, number 2. Yeah, cat. Number 3. Number 3. Anybody remember what was there at number 3? Number 3. Lines. Fish. Yeah, fish was right. And what was there at number 4? Number 4. Yeah, it was a tree. Mashallah, mashallah, barakallah fiqh. Thank you, everyone. This was the point that I wanted to clear to you all, that memory has very good impact when you draw. So you draw initially at the start of the meeting, it was around 45-50 minutes ago, and now you can remember. You did not rectify it, you did not cheat, but you were able to remember that what you have drawn. So mashallah, this was the point that they have proven through this, this theory, this experiment. And I hope that you got my point. So here it is, this Confucius code. I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. So you all need to do this. You all need to practice it, right? And when you will do it, you will see, and you have seen it right now. It's immense, impression on your mind and your brain. So here are some takeaway for you. Learning how to draw is like learning a new language. It can't be that hard. Do it and don't be afraid. Everybody has to start somewhere. There is no right or there is no wrong. You can invent new words, new pictures. जैसे हमने invent किए आज अपने session में. The ability to draw can expand our learning potential, as we are all lifelong learners. Our brain loves pictures. So I hope you must have gained something from this session, or moreover, you have enjoyed as well. And inshallah, see you in the next session as well. जाते जाते आप लोगों के लिए एक और ये gift है. You can just check this out. You can take the screenshot of this link. It's a free drawing link at the Google, and you can use it with your students and for yourself as well. It will again enhance your more variety of your brain thoughts. So there are some of my details that you can see on the screen. You can get in contact with me on the Gmail, my number, and my Facebook page, that is Neon Women Network. So inshallah, see you at the next session, inshallah, by the EdLab. Thank you, Ms. Fareen, for inviting and keeping this session so warmly. And I thank to all the audience as well for being so participative. Jazakallah. Thank you so much. And I would agree that this was a wonderful interactive session. और बहुत ही लगता है लोगों को बहुत मजा आया है, because as drawing keeps us young, और arts and craft ऐसी चीज है जो हर किसी को, like whatever their age is, they enjoy it. Yeah. So I am sure that participants may have enjoyed it. Here is a certificate link in the chat box for you all to fill in. Yes, Rahila, you have raised your hands. Please ask whatever you want to ask. Rahila, please unmute yourself. राहिला, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. Okay. Thank you so much, participants, and thank you so much, Ms. Nida, for conducting this session wonderfully. Pleasure is always mine. See you next time in